Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about MEG 03 British novel. आपने कहा सर इस पेपर में हमें क्या करना है? What we guys need to clear for this particular paper for the upcoming examinations. Yes, I'm talking about your December T examinations. So the question that you guys need to prepare for your paper, sir, क्या क्या करना है, कौन से questions होंगे, and how much question that we're going to do for this particular paper. 24 yes, the 24 questions that you guys need to prepare for your upcoming exams of British novel. आपने कहा इसको कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या और बेसिक फॉलोअप क्या होंगे, क्वेश्चंस एग्जाम में सेम होंगे या इनसे रिलेटेड होगा, पूरा का पूरा पेपर इन्हीं के चारों होगा, सिर्फ लैंग्वेज को मोल्ड किया जाएगा। रिपीट, मैक्सिमम लैंग्वेज को मोल्ड किया जाएगा, पेपर पूरा यहीं से होने वाला है। तो गाइस डू फॉलो दिस वीडियो टिल लास्ट। लेट्स स्टार्ट द क्लास विद टू मेजर थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि सिर्फ और सिर्फ नॉवल बायस क्वेश्चन नहीं आते। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो राइटर्स या इरा को रिलेटेड भी होते हैं, जो फर्स्ट हाफ में मिलते हैं आपको। राइट द फर्स्ट थ्री। नंबर वन, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ ब्रिटिश नॉवल। आई रिपीट, द वेरी फर्स्ट राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ ब्रिटिश नॉवल। यस, दैट यू नीड टू क्लियर। ये आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए, कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं, कौन सी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। The first one is a write a critical note on the evaluation of British novel. This question you guys need to keep in mind. Jump up to the second. Write a brief essay on fiction as a history. रिपीट, ये लोगों ने तैयार नहीं किया, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, डेफिनेट नोट्स यू हैव दिस आंसर। कहता राइट अ ब्रीफ एसे ऑन फिक्शन एज हिस्ट्री। द सेकेंड वन, write a brief essay on fiction as history. So you be able to clear these two. Yes, these two are the most important जो आपको पहले क्लियर करने हैं। हाँ, दोनों को अलग कर दूंगा बिल्कुल ही, ये दोनों अलग होंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द एग्जामिनेशन। आपको सर हमारा पेपर जो आना है उससे रिलेटेड बिल्कुल अलग होंगे। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं ब्रिटिश नॉवल। आई स्टार्ट विद टॉम जोन्स। यस, टॉम जोन्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एटीट्यूड्स टूवर्ड्स मैरिज। I repeat, what attitudes towards marriage does Fielding illustrate in Tom Jones? So you have the third question. What attitude towards marriage does Fielding illustrate in Tom Jones? So a question definitely both important from the point of the examination. Yes, you guys need to prepare this question. आप कहते हो क्या attitude था towards the marriage that was being shown by Fielding in his work Tom Jones. Come on, next one. That is, discuss how Tom Jones is a novel about division of life in segment. I'm repeating the question, guys. Discuss how Tom Jones is a novel about the division of life in segments. इस क्वेश्चन को प्लीज करके जाना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि मुझे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन इसी क्वेश्चन से है।
I'm repeating the question. Discuss how Tom Jones is a novel about the divisions of life in segments. So these are the two most expected question from Tom Jones. So इनके अलावा हमें टॉम जॉन्स में क्या करना है, हमें थीम्स पे काम करना है. वी नीड टू वर्क ऑन नरेटिव टेक्निक. आई रिपीट, एक क्वेश्चन मैंने लिखना ही ना, शेयर नहीं करा, लेकिन नरेटिव टेक्निक का क्वेश्चन आएगा ही आएगा MEG03 में. इसको लिख लो, अभी दिमाग में डाल लेना. नरेटिव टेक्निक का क्वेश्चन कंफर्म है जो एग्जाम में आना ही आना है. सो यू गाइस नीड टू क्लियर दिस कि ये क्वेश्चन हमें ऑन टिप होना चाहिए. जब अब नेक्स्ट सेगमेंट, दैट्स प्राइड एंड प्रेजुडिस. डिस्कस द नरेटिव टेक्निक. मैंने पहले बोल दिया था. डिस्कस द नरेटिव टेक्निक in Pride and Prejudice. How does it influence the reader's reaction to the novel? I repeat, discuss the narrative technique in Pride and Prejudice. How does it influence the reader's reaction to the novel? This what you guys need to keep in mind while writing the answer to this one. Next one, comment on the comic characters in Pride and Prejudice. कमेंट ऑन द कॉमिक कैरेक्टर्स इन प्राइड एंड प्रेजुडिस. तो ये तो ऑन टिप होना चाहिए. कॉमिक कैरेक्टर सर किसकी बात कर रहे हैं हम? वी टॉकिंग अबाउट द कॉलिंस सर? नहीं, हम बात कर रहे हैं किसकी सर? हम सर कॉमिक तो मिसेस बैनेट को ले सकते हैं ना, ऑफुल लेडी. हाँ, कॉन्सेप्ट हैं आपको क्लियर करने. सो कमेंट ऑन द कॉमिक कैरेक्टर्स इन प्राइड एंड प्रेजुडिस. द नेक्स्ट वन फ्रॉम द प्राइड एंड प्रेजुडिस इज आइडेंटिफाई द चीफ फीचर्स of love and marriage in Pride and Prejudice. I repeat, identify the chief features of love and marriage in Pride and Prejudice. And the last question from Pride and Prejudice is comment on the use of wit and irony in the novel Pride and Prejudice. So this is what you guys need to keep in mind while preparing for MEG03. ये है first two novels, Tom Jones and Pride and Prejudice. I hope that you guys been clearing this. Time to discuss about Wuthering Heights. Yes, it's time to discuss about Wuthering Heights after Tom Jones and Pride and Prejudice. So here we have the first question from Wuthering Heights. Write down please. Write the narrative technique in Wuthering Heights.
I've told you this narrative technique question definitely come in examination. So here we have the question. That question number 9. Discuss the narrative technique. That's really important. Narrative technique in Wuthering Heights. This is the most expected question from MEG 03. That's the narrative technique. Come to the question number 10. Here we have, in what way is the concept of marriage in what way is the concept of marriage central to Wuthering Heights? In what way is the concept of marriage central to Wuthering Heights? Yes, you guys need to clear this question. This is something very important from the point of the examination. अगर मैं इस concept को लेके चलता हूं तो I'll be able to clear everything. Jump up to the next question. That's question number 11. Here, in what way Wuthering Heights is a psychological novel? In what way is Wuthering Heights a psychological novel? सो ये क्वेश्चंस हैं हमारे जो वुथरिंग हाइट्स से करने आपने. द 3 क्वेश्चन फ्रॉम द वुथरिंग हाइट्स. Discuss the narrative technique in Wuthering Heights. In what way is the concept of marriage centered in Heights? And then what way the Wuthering Heights is a psychological novel? एक क्वेश्चन और बनता है, that's really important. Comment Heathcliff is a Byronic hero. I repeat, comment Heathcliff as a Byronic hero. इसको दिमाग में रखना. I repeat, इसको दिमाग में रखना है, पेपर क्वेश्चन में आने के पूरे चांसेस हैं guys. So make sure that you guys going to do this question too. Jump on next segment. Here we have the next question, and that's from the Great Expectations. Question number 12. We have discuss Great Expectations as a builds go Roman. अब काफी सारे क्वेश्चन होते हैं सर, ये बिल्ड्स गो रोमन है क्या एक्चुअली? द ग्रोथ ऑफ अ कैरेक्टर. यस, ऑनेस्टली द ग्रोथ ऑफ कैरेक्टर. फिलिप को यहाँ डिफाइन किया, पूरा ग्रोथ दिखाई गई उसकी, क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या हाईलाइट करता है, किन पॉइंट्स को डिफाइन करता है. पूरा प्ले जो है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, इट्स ऑल अबाउट फिलिप द पिप, उसको हाईलाइट करता है, उसके पॉइंट्स को डिफाइन करता है. तो येस, यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि किन चीज़ों को डिफाइन किया है, कौन कौन चीज़ें बता रहा है और आप कैसे रूल आउट करते हो बेसिक्स को. तो कीप दिस इन योर माइंड while preparing for this question. Come on, next one. Question number 13. How does Great Expectation subvert the idea of a fairy tale?
सबवर्ट द आइडिया ऑफ अ फेरी टेल। गाइस ये क्वेश्चन तो कंफर्म बनता है, जो हमें आना चाहिए. So these are the questions that you guys need to do from the Great Expectations. So Great Expectation as a build score Roman, then how does the Great Expectation subvert the idea of the fairy tale? It's a fairy tale for Pip. From an orphan to the man who can do anything in a city like London. Honestly, it's a fairy tale. Jump up to the next part. That is question number 14 from Middlemarch. Explain social and gender concerns in Middlemarch. The next one is social and gender concern. Gender सर हमारे पास हो गया, इसको क्लियर करना था. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज how do conflicting attitudes to money, I repeat, how do the conflicting attitude to money determine the relationship between Lydgate and Rosamond in Middlemarch? This is really important. आपने कहा सर 14 क्वेश्चंस के बाद ना थोड़ा वीडियो में इशू हो गया था गाइस, तो आई नीड टू डू इट अगेन, कांट हेल्प इट. सो हियर वी हैव explain social and gender concerns in Middlemarch, and then we have how do the conflict attitudes towards the money determine the relationship between Lydgate and the Rosamonds in Middlemarch. नेक्स्ट वन. तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है किसका, सब मिडल मार्क के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. विल जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सर द हार्ट ऑफ डार्कनेस. Here, comment on Marlowe's shifting opinion in Heart of Darkness. The first, Marlowe's shifting opinion in Heart of Darkness. Then, comment on the aptness of the title, The Heart of Darkness. The aptness of the title of The Heart of Darkness. Along with this, guys, make sure यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, that is the narrative technique. Omniscient narrative technique, third person narrative technique है, जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए from this particular story. That is Heart of Darkness. Come on to question number 18. Yes, that's really important. अब यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आता हूँ, दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ आती हैं. दैट आई नीड टू गो थ्रू दिस फेज और कुछ और ऐड करना है. सर आई एम टॉकिंग अबाउट द पोर्ट्रेट ऑफ यंग मैन एज एन आर्टिस्ट. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रियली वॉन्ट यू गाइस टू क्लियर दिस वन. ये अब पेपर में आएगा गाइस. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम दिस स्टोरी लाइन, क्वेश्चन नंबर 18. Joyce uses FNA and stream of consciousness stream of consciousness in a portrait of the artist as a young man discuss. This what we guys need to clear, and this is the most expected question here. Joyce used the FNA and the stream of consciousness in a portrait of artist as a young man. ये question आपको on tip होना चाहिए. Along with this, we have the next question from this particular story that it discuss the main principles of aesthetic put forward by Stephen
In a portrait of artist's young man, discuss. सो गाइस अगर मैं बोलूं तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टीफन्स ऑनटिप होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कंफर्म है जो पेपर में आएगा ही आएगा, एंड यू गाइस नीड टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट. जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट. Here we have the two question from this storyline, and then a passage to India. Yes, that's something very important. Question number 20. Discuss a passage to India as a novel focusing on the east-west interference. Yes, discuss a passage to India as a novel focusing on the east-west interface. Next we have critically examine the symbols. ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है. Critically examine the symbols used in the novel A Passage to India. Next. So here we have the done with these two. Yes, we've done with these two. Now come up to the last play, the primer mist. Brodie. What are the issues raised by the author in the prime of Miss Body? I repeat, what are the issues raised by the author in the prime of Miss Body? The next question, that is, discuss the autobiography elements in the novel the prime of Miss Body. And the last question for this particular paper, do you agree with the view that the prime of Miss Body is a symbol of non conformity?
Yes, these are the questions that you guys need to prepare for your upcoming exams. For more, you can contact. The number is really there. आपके पास number है for the notes and online session and the crash course. Wish you all the best, guys.